Good afternoon, sir. Thank you for giving me the opportunity to present my presentation in front of you. This is the title of my presentation, Exploring Decentralized Application for Supply Chain Management in Manufacturing Sector. So, what As was the motivation, Samiksha, to pick this title? So nowadays, somehow we all are suffering from different type of issue. Recently, I have ordered something from Amazon, and then my order got cancelled. I don't know the reason behind it. But if we use decentralized application instead of normal application that we are using now, so will improve the efficiency and reliability, so we can easily got to know what will be the reason behind cancel my order. So this is the main motto. You was a self victim of this type of thing or the supply chain actually. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's why the reason you want to explore this area. Yes, yes, sir. What exactly you bring here? So I have explored different type of technology which is used in decentralized application, such as blockchain technology, uh, smart contracts, and many more things mm, What do you think these peoples like Amazon, Flipkart, or other major giant in the supply chain? These are the basic what we know about whether the UPS or other. They are very big giant in supply chain. So yes, why they are not using? Are they are failing to use modern technology in their supply chain? And specifically, you are focusing on the manufacturing sector. yes, sir. So which type of manufacturing sector you are targeting for supply chain, or what exactly your key area where you want to implement your research? So like uh, like manufacturing sector legislative mm, means from manufacturing industry to in the user, like Any industry you're taking in focus from the particular company or particular no. is the your focus, or you are generalized. You did it as a generalized I'm one. just exploring decentralized application work. Okay. So you are using the centralized, decentralized application. So what does it is? So, as nowadays we are using centralized application, only there is only one authority which have access to, which have all the privilege to change, to consume the data of the user. But in decentralized application, everything will be secured, and as I have mentioned that we used blockchain technology, means every user get their one nodes, and every nodes have their the relation between the another node, which is considered as a hash address. So these all are the technology which is used in decentralized So application. blockchain is basically used for decentralization. Itself, blockchain is used for decentralization. Yes, sir. And one of the major example of blockchain are Ethereum nowadays. That is in case of you go for the cryptocurrency. Yes, cryptocurrency. Here you are mentioning supply chain and logistic. Yes, sir. So how blockchain can help a supply chain system or a logistic? Mm. Have you any example of it? Yes, sir. Recently, Let we have a manufacturing unit. Just mm, understand the thing. I have a let consider that either you or me have a manufacturing unit and we are manufacturing some FMCG product, say toothpaste. mm, Okay. So when you consider a toothpaste, when you come in market, what exactly you require? You required a plastic tube,
with cap. Yes. Yes, sir. You require all the chemicals for the Hmm. making toothpaste. Hmm. And if I consider that in my plant I am doing mixing only and packaging only, it has become a small manufacturing unit for toothpaste, where we bring raw material from the various sources. We bring raw material from the various sources. Let there are approximately 7 to 8 type of chemical required to prepare your toothpaste, and these 7 to 8 chemicals supplied by three vendor of us. Okay, we have three vendors: vendor one, vendor two, vendor three. They supply the chemicals, and another vendor is the vendor four, who provide us the tubes in which we will going to fill our toothpaste. These three things plus tubes, they comes from total four vendor. We have to collect all these on our inventory store. Then we supply all these things to our work table or manufacturing setup or packaging setup, mixing and packaging setup. And after once the packaging labeling was done, the will done, what we have to do? We have to send these things to our dealers. Yes. Okay, then those dealers will send all those items to different retailers. So here you require a supply chain from vendor to customer. Customer. Okay, to maintaining this supply chain, what exactly decentralized is now here? We got to know. Unit here, a supply chain, as I explained you, a very simple supply chain. Hmm. Now, as per the blockchain concept, if you are considering the blockchain concept now, Hmm. so as per the blockchain concept, explain me ki how you will going to implement your stakeholders, how you bring your stakeholders or users on this platform, how you make the system decentralized. Because if you are using a centralized system, means we have a software, very simple software, in Hmm. which we list all the vendors from where we are bringing the material. Okay, and whenever we require the material, automatic requirement will generate as per the chemical required, as per the tubes required, and that will be put in the system of my vendor. And according to the vendor, purchase or create those material and create an invoice and send to us. Once their invoice is finalized, payment is done, they supply their order using trucks and all. Now those trucks come to us, and then we verified all the material received or not in our inventory and update in our software. There we required a software. Now your work is start. Here, as an admin, I am the key person who is looking your whole software, vendor one, vendor two, vendor three, supplier one, supplier two, supplier three. Now, how your blockchain model will implicable in? Just a minute. Samiksha, could you please explain me about blockchain only? So recently, I have also mentioned here the example of IBM food factory. They all are using blockchain so that from the go down to the end customer, like all of us, got to know the exactly what exactly know the location tracking, especially tracking. Got to know the location where our uh, total supply chain are easily visible to all of us. So am I audible?
Yes, yes, I can hear you. Please. Yes, Samiksha, I can hear you. You can proceed. Hmm. Samiksha, I'm audible. ये सर वो थेसिस में मैंने मेंशन किया है आईबीएम ट्रस्ट आईबीएम कंपनी ने एक फूड ट्रस्ट वेबसाइट बनाया है जिसमें हम लोग इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं हमारा जो भी हम लोग फूड आइटम ऑर्डर कर रहे हैं सो हम लोग इजीली देख सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है लाइक अभी के एप्लीकेशन में वो सब चीज़ें हैं बट एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें and in blockchain technology we use smart contract as I have mentioned here ethereum is the most common example nowadays इसमें क्या होती है like maybe in india also एक वेंडर एक वेंडर एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें हम लोग वी नीड टू इंसर्ट कॉइन्स लाइक 10 रुपीज कॉइन्स और कोई थर्ड पार्टी नहीं होंगे बीच में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग कभी-कभी सीओडी अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमें पहले पेमेंट करना होता है लेकिन कभी-कभी हमारे पेमेंट के बावजूद भी वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है तो ये इस टाइप का इशू ना हो इसलिए ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड किया गया है तो ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है? से सारे नोड को उसके फर्स्ट वाले नोड का इंफॉर्मेशन रहता है सो चलिए आगे प्रोसीड कीजिए। चलिए हाँ, आगे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। so a supply chain is a network of interconnecting business and process. It includes various entities such as supplier, manufacturing, distributor, and all of that. Uh, Effective supply chain management required coordination and collaboration among these entities, as well as integration of key business process such as product development, production, distribution, and customer services. In this, we use decentralized applications to create open source peer-to-peer, unlike traditional centralized applications that rely on a single entity for operation. But in decentralized operate networks of node, ensuring great transparency, security, and reliances. Some core characteristics are first, decentralized, that eliminates the need for central authority, reducing the risk of single points of failure and enhance security. The second one is open source, encourage innovation and collaboration as anyone can expect, modify, and enhance the code. Then second one is smart contracts. We don't need the third party in this. It's a agreement directly written into the code. Some literature review. What you identified from this literature review? What exactly this literature review? What type of paper you considered, and what research gap you identified? Um, You are going for your final submission, na? yes, sir. If you are going for final submission, you have to make it in a tabulated form. Okay. Okay, where you will mention what are the gap you had identified from these researches. And even though you are mentioning 2024 paper, okay, it's 2025 that will be considered. But they are the early 2024 paper, means January, February, they may publish that you may consider for your research. Because during the rest part of the year, let's say October, November, December, you are supposed to be drafting your thesis. Okay, so now one thing that also you have to identify your base paper. As I told you, yeah, as you know, that blockchain technology is not a new chunk. Hmm. There are lots of work in parallel space in the various
researchers are doing lots of researches on this, and specifically when you are considering the supply chain management and you are considering the Picture. accounting of this cryptocurrency and all, their blockchain technology is used widely used, and because of security only. And you have to your own understand what is the blockchain technology, what exactly happened if I am not using blockchain technology. In that particular case, whatsoever the repository, whatsoever the data, whatsoever the information that will be stored in a single place, in a single server. For example, as I told that I am a manufacturing unit, to my supply chain information, my vendor information, my inventory information, everything will store in a single server on a single place. Okay. Yes, Now sir. what happened? If in certain case my own server is get failed, then everything will be stuck. Then I will not able to order, I will not able to receive anything, or my invoice, everything will be failed. While if I am using the blockchain, in that case my server will be divided. If I have n number of vendor, so there will be n number of nodes where your data, where your software will get stored and work. As you say here, you can upgrade the code. If a vendor want to change in codes in terms of computers network in general language, if they want to upgrade something, they can upgrade on their own network, and that will not affect the others thing. Maybe possible if vendor are doing something wrong, that may affect the whole network. But in the blockchain, that will be limited to that particular resource or that particular the node, until or unless next node or next section is not accepted. Okay, there Yes. are facility for that also. So what happen if one particular vendor get failed or one particular server is failed, that will not affect your business, because your data is distributed among the multiple server or multiple places. As a result of that, whenever you require to access your data, or whenever, or even the what happened if some cases what actually happened, security if you are talking, no? So let you there may be a cyber attack, or somebody hack my system or my server. So as early as my server hacked or any malpractice happen on my network, that particular server or that particular node is automatically removed from the system without affecting the whole. Otherwise, what happened? Your all data on the same server, and if some hacking will done, then what happened? My whole process will be Corrupt. Yes. corrupted. So what actually thing happened? As there is the chance of hacking is always there. If hacking may persist, it will affect only one system or one server only, or one node only, and the rest of my network is remain unaffected, because as early as my system detect this particular hacker and particular software have to be communicate with the secondary system or the secondary server or third server or fourth server. So when they are tried to reach, or some misleading or some hacking or sort of thing happen, then whatsoever the code transferring from the one system that having any type of malpractice, that detect it and cut off that particular server from they are receiving such type of messages. So as a result, your whole network becomes secure. And for a vendor network, for a cryptocurrency network, it is mandatory. For banking system, it is mandatory. Yes. एक बैंक में एक ऑफिसर का सिस्टम खराब हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, पर बाकी सब ओपन रहेगा तो काम चलता रहेगा, कुछ रुकेगा नहीं। एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही अफेक्ट होंगे। पर अगर आपने इसको ओपन रख दिया, वन एंड पे सब कुछ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रखा, तो वो क्या होगा कि पूरा की पूरा सिस्टम एक बार में कोलैप्स कर जाएगा। तो इस पे किस तरह की रिसर्च चल रही है, किस तरह के एल्गोरिथम लिखे जाते हैं, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा, जो आप नहीं बताए हो। फिर अब सप्लाई, आप क्रिप्टो का तो एग्जांपल ले लिए, सप्लाई चेन में उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन सप्लाई चेन ऑफ Supply chain. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Yes.
तो यू हैव टू कनेक्ट दैट। एक कंपनी अगर एक सिस्टम के ऊपर ही काम करती, सप्लाई चेन के अंदर सबसे बड़ा रुकावट क्या होता है, दे आर मल्टीपल बिजनेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल वेंडर, और वो मल्टीपल उसके इनपुट होंगे, मल्टीपल आउटपुट होंगे, और वो मल्टीपल वे से, अगर मैं एक सिंपल ट्रांसपोर्ट कंपनी भी ले लेता हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी भी ले लेता हूँ, तो उसके लॉजिस्टिक के उसके पास 100 ट्रक्स हैं। तो 100 ट्रक अलग अलग बिजनेसेस के अंदर जा रहे होंगे, अलग अलग सामान ढो रहे होंगे, अलग अलग कंपनियों के साथ उनका टाई अप होगा, और वो डिफरेंट तरीके से मूवमेंट उनका चल रहा होगा। तो हमको अब वो सारी चीज कम्युनिकेट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक सिंगल नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में काम करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। एक भी फेलियर पूरा की पूरा आपका सिस्टम कोलैप्स कर देगा। तो ये चीज आपको सामने रखना है जो आप नहीं बता रहे हो। अब इसमें क्या क्या रिसर्च हो गई है, कौन से हाइब्रिड मॉडल होते हैं, कौन से कन्वेंशनल मॉडल्स होते हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू योर लिटरेचर सर्वे। ठीक है। अब इसके बाद रिसर्च गैप्स आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किए थे वो बताइए। रिसर्च सर्वे तो मेंशन ही नहीं है अब। I think I have mentioned here. Mention. Shit. समीक्षा जी आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपको दिखाना Yes. पड़ेगा। Yes, sir. चलिए आगे बताइए। So methodology part. यस, एक्सप्लेन योर मैथोडोलॉजी। The research methodology for studying supply, exploring decentralized applications for supply chain management in manufacturing sector is to design, systematically investigate and integration of decentralized application in manufacturing supply chain. This section outlines the research approach, data collection method, data analysis technique, and ethical consideration employed in the study. Research approach. The study employ a mixed method research approach to comprehensively explore the multi-phased dimensions of integration. This approach allow for a holistic understanding by combining both qualitative and quantitative perspectives, like qualitative perspectives including supply chain manager, technology expert, and industries in quantitative data collection. Large sample of quantitative data is gathered through online survey, like uh, distributed to large sample of manufacturing professionals. Objective is evaluate depth sustainability. This involves analyzing the technical, operational, and economic factors that influence the integration of depth into existing supply chain. The second one is identify use case. This involves areas such as inventory management, traceability, quality control, and real-time collaboration among stakeholders. And explore implementation strategy. Hello. Just continue. पैसे तो नहीं काट रहे हैं ना सर, देख लेने का। It involve exploring how depth contribute to increase completeness, sustainability, and reliance in manufacturing supply chain. This come under examine industry's impact. The result and discussion are it enhance transparency and traceability. Decentralized application provide a secure, immutable that increase transparency and traceability across the supply chain. The result is better monitoring of product
from origin, movement, and quality, reducing risk as such as counterfeiting and fraud. In counterfeiting, we got the scanner to scan the whole supply chain process, improve efficiency and code reductions. The efficiency led to faster transaction and reduced administrative overhead. Then increase security and data integrity. Mm, this enhance overall security and integrity of supply chain data, enhance trust among stakeholders by providing transparency, proof record of transactions, potential for future growth. Future advancement in technology and regulatory frameworks may facilitate the adoption. Here is a pie chart. Here is a pie chart including enhancements, transparency, trust enhancements 25%, security and data integrity 20% increased, efficiency and code reduction 25% increased, and transparency and traceability 30% increased. This is the benefits of decentralized application in supply chain management. Conclusion is these benefits can lead to significant cost reduction and foster great trust among stakeholder from manufacturer and supplier to in customer. Some factors like technical factors, blockchain technology, its ability to ensure data integrity, immutable and security position. It is reliable solution for managing complex supply chain. As now you teach us like managing complex supply chain, we have to use blockchain technology so that it use integration complexity. Also, the integration complexity is moderate. It can be through strategic planning, incremental implementation, and development of middleware. Like smart contracts at the core of decentralized are smart contracts, self-executing contract with terms of agreement written into the code. In operation factors, transparency and traceability. By providing a comprehensive tamper-proof record of transaction and movement within the supply chains, they build trust among stakeholder and ensures with regulatory requirement. Real-time access, we got to know update all about the details about our supply chain, the capability of decentralized application to delivery real-time update improves operational efficiency by enabling time decision making and swift response to change or stakeholder collaborations did lead uh, process and improve overall supply chain performance after enhancing collaboration among stakeholders. An economical factor, cost benefits analysis, the operation saving improve efficiency and reduce the error contributions, uh, and marketing competitiveness is by leveraging advanced technology, firm can achieve better customer satisfactions, operationals, and involve capacity which currently strengthen their competitive edge. These are future scopes. Several key areas are expected to shape the future landscape, such as advanced technology and emerging technology, which is, for example, IoT, Internet of Things, and artificial intelligence, machine learning, deep learning as well, enhanced interpretability, uh, scalability, and performance improvement, education, and skill development. Some references are समीक्षा जी, yes, sir. डेटा कहाँ से कलेक्ट किया? आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखा कि Hmm. आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट किया, Hmm. Yes, sir. तो किससे कम्युनिकेट किया, कैसे कम्युनिकेट किया, क्या कोई क्वेश्चनेयर उन्हें बना के दिया था, और उनसे क्या डेटा आपने लिया था? आप जैसे बता रहे हैं
रहे हैं कि प्रॉफिट में या फिर किसी भी चीज में उनकी एफिशिएंसीज में इम्प्रूवमेंट आया है, प्रोसेस में Yes. इम्प्रूवमेंट आया है, तो उसका Mm. जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है? आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो आपका सबसे पहला पार्ट है, Yes, आपको sir. एक डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ भी आपको एनालिसिस करना है, वो Yes, sir. आपका डेटा सेट कहाँ से आएगा वो आपने नहीं बताया, ठीक है। और अगर आपने कोई डेटा सेट बनाया है तो उसका रिसोर्सेज बताइए कि वो कहाँ से है, कितना डेटा है, और उस डेटा के ऊपर आपने क्या प्रोसेस करी है। आपने प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बताया है कि डिसेंट्रलाइज उसे हमने किया है, तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर में कौन सा एल्गोरिदम हमने यूज किया है, आप उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप डीएप जो बात कर रहे हैं, डीएप के फीचर्स, उसके प्री एंड पोस्ट, मतलब कन्वेंशनल एंड आपका डीएप लगाने के बाद के चेंजेस उसी Hmm. डेटा के ऊपर एनालिसिस करके आपको देना था, तो वो आपने दिया नहीं है, Okay, sir. है ना। आपका जो गैप आइडेंटिफिकेशन है लिटरेचर रिव्यू के बाद वो अवेलेबल नहीं है। उसी के बेस पे आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनने चाहिए, उसके बेस पे आपका मैथडोलॉजी के अंदर रिसोर्सेस आपको बताने होंगे कि डेटा आपको कहाँ से मिलने वाला था, और उसके ऊपर आप किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले थे टू जनरेट अ प्रॉपर एल्गोरिथम टू बी यूज्ड, और उसकी क्या क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिले। आप कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है ना, Yes, sir. तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज आपको बतानी होगी, सर्वे बेस्ड तो आपका वर्क हो नहीं सकता ना। Hmm. आप जो भी चीज बना रहे हैं यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर फॉर दैट ना। Yes, sir. वो क्या सॉफ्टवेयर था, उसका क्या मैकेनिज्म था, उसके अंदर क्या क्या इनपुट्स थे, उसके आउटपुट्स क्या थे, उसके स्क्रीन्स क्या है, कुछ तो आप इमेजेस दिखाइए, Okay, sir. Table I have to mention here. है ना। आपके टेबल्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, आपने क्या क्या है वहाँ पे चेंजेस ऑब्जर्व किए, प्री एंड पोस्ट दोनों एनालिसिस आएगा, वो आपने दिया ही नहीं है। अब सीधे रिजल्ट डिस्कशन पे आ गए कि इतना हमारा इम्प्रूवमेंट आ गया, कैसे आ गया बताया ही नहीं, हमने क्या Okay. किया बताया नहीं, ठीक है। और आप पूरी की पूरी पीपीटी को सेंट्रली अलाइन करके लिख रहे हैं, जैसे रेफरेंसेस ये सेंट्रली अलाइन नहीं होंगे, जस्टिफाइड या लेफ्ट अलाइन होंगे, ठीक है। Okay. इसके अलावा आपको वही रेफरेंसेस यहाँ मेंशन करने हैं जो आपके प्रेजेंटेशन में आप यूज कर रहे हो, लिटरेचर सर्वे में आप दिखा रहे हो, ठीक है। और उसको एपीए फॉर्मेट में लिखना है, आप यहाँ पर एपीए फॉर्मेट भी या एपीए एमएलए फॉर्मेट में लिखना है, उसी तरीके से आप लिखिए, जनरलाइज नहीं लिखना है। Okay, sir. फिर आपके जो वैल्यूज हैं वो क्वांटिफाइड होनी चाहिए। आप जनरल बात कर रहे हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट ला दिया, क्या इम्प्रूवमेंट ला दिया, कितने परसेंट लेके आए, क्या पहले वैल्यूज थी, वो सारी चीजें मिसिंग है, Okay, sir. ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अपने प्रेजेंटेशन में लानी पड़ेगी। सप्लाई चेन के बारे में आपने बात करी, तो सप्लाई चेन और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई चेन क्या होता है, इसका डिस्कशन आपको इंट्रोडक्शन में करना चाहिए था, वो आपने प्रॉपरली नहीं किया। आपको इसके लिए जो फ्लो डायग्राम्स वगैरह होते हैं दे ऑल आर मिसिंग, मे बी पॉसिबल आपकी थीसिस में होंगे, Yes, sir. तो सारी चीज उसको include. लगाइए ना, तो वो सारी चीजें दीजिए, चीज वहां से आपका सिंप्लीफाइड होते हुए आ गया है। Okay, sir. लिटरेचर सर्वे टैबलेटेड फॉर्म में बनाइए, ठीक है। आपके बेस पेपर आपने क्या आइडेंटिफाइड करे हैं वो बताइए, और उन बेस पेपर के बाद आपने क्या अपग्रेडेशन किया है वर्क में वो आप बताइए, ठीक है। तब ठीक है. जाके आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा। तो प्लीज अपडेट दीज ऑल फैक्टर्स इन योर प्रेजेंटेशन एज वेल एज इन योर थीसिस। Okay, sir. कब है आपका डिफेंस, कब है? सो अभी डेट नहीं आएगा है. चलिए ठीक है, मीन्स आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो एक बार थॉरली अपना थीसिस एग्जामिन कीजिए। हम्म. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई थिंक आपने पूरा खुद से बनाया होगा, सारी चीजें खुद से करी होगी। अब जैसे मेरे को सामने आपका एक पेपर दिख रहा है, हम आईओटी बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम पे आ गए। हम्म. अब मेरे ब्लॉकचेन के अंदर आईओटी का क्या मैंने इस्तेमाल किया है, ये पेपर मुझे क्या बता रहा है। आपका ऊपर वाला पेपर है अविनाश कुमार चैप्टर 14, ये आपने कोई चैप्टर लिया है ब्लॉक
ब्लॉकचेन बेस्ड सेंटर, ये कोई बुक चैप्टर है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। Yes, sir. तो हम अब यहाँ पे आईओटी इक्विपमेंट की बात होने लगी है रात से। ये दोनों पेपर जो फर्स्ट और सेकंड पेपर मेरे को इस पेज पे दिख रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा सा चीज अपने टाइटल को भी समझना जरूरी है कि मैं जो टाइटल दे रही हूँ उस टाइटल के ऊपर हमने क्या प्रेजेंट किया है। ठीक है, Yes, sir. हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। हम थ्योरी भी सही से नहीं बता पाए हैं, हमने एक्सपेरिमेंटेशन क्या किया है वो भी हम नहीं बता पाए हैं, हमने वर्क क्या किया है हमें पता नहीं है, हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हम नहीं दिखा सकते। तो ये सिचुएशन में आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो बी क्लियर ऑन एवरीथिंग। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप इसको लीजिए, आपके इसके अंदर मुझे ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशंस और उसके एल्गोरिथम, उसका टेक्निकलिटी कुछ भी नजर नहीं आएगी, तो प्लीज इंट्रोड्यूस दैट। Okay, Okay. all the very best, Samiksha. Take care. Thank you so much, sir.